जगह, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगह, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया. Hey Australia, this is Rihanna De Cruz and you're listening to Radio Manpasand. मेरे रश के कमर, जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया. I am Moinul Haq, your ACT Greens candidate for the seat of Yarrabi at this ACT election. You are listening to Radio Manpasand 24/7. तड़का लगा के लगे रहिए, सुनते रहिए. दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद. जी हाँ, पूरा तड़का लगा के. मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी को मैं कहता हूं सब प्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते. कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके शहर में, आपके मोहल्ले में या आपके देश में, उसका आप पालन कर रहे होंगे पूरी तरह. चलिए, आज मनपसंद मॉर्निंग शो है, तो आज मैं मनपसंद मॉर्निंग शो में आज एक विशेष प्रोग्राम लेकर आया हूँ. चलिए, और जैसे आपको बता दूं कि मैं ये ACT कैनबरा से ये प्रसारित करता हूं, ये रेडियो मनपसंद का प्रोग्राम. तो ACT में इलेक्शंस की घोषणा हो गई है. 17 अक्टूबर को इलेक्शंस हैं, 17 अक्टूबर यानी 2020 को. और इसमें कई हमारे जो देसी भाई हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आते हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं. और जितने भी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोरेट हैं या ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं या इलेक्शन क्षेत्र हैं वो 5 हैं. यरबी है, जनिंदिरा है और कराजोंग है, फिर नीचे आ जाइए तो मोरम्बीजी है और ब्रिंडाबेला है. और हर एक क्षेत्र से 5 कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाएंगे. चलिए, आज मैं आपको मिलवाता हूँ. यरबी क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं श्री मैनुअल हक जी, यरबी से हैं और ये ग्रीन्स पार्टी के कैंडिडेट हैं. नमस्कार, वेलकम टू रेडियो मनपसंद. आपका स्वागत है, अभिनंदन है. और नमस्कार जी. कैसे हैं मैनुअल भाई? थैंक यू भाई साहब. अच्छा हो. अच्छा, अरे वाह, आप हिंदी बोल लेते हैं. थोड़ा बोल लेते हैं. चलिए, बढ़िया है. और चलिए, आपसे और जानकारी लेंगे कि आप कहाँ से हैं और कब आना हुआ कैनबरा में, कब ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट किए, इस बारे में कुछ बताएंगे हमारे श्रोताओं को. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब, मनीष भाई, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. Greetings to all the listeners in Australia and across the world. It's a beautiful day outside in Canberra today. I'm originally from Bangladesh. Left Bangladesh after my year 12 in 83 as a young teenager. Achha. I did my bachelor in economics in Malaysia and then I went to Canada, did my master's in economics when I was doing a PhD in economics. Then came to Australia in 92. Right. Meant to be only for 2 weeks holiday. Achha. I applied for migration and said, oh, okay, you go. Achha. Then I came with a return ticket, meant to be staying here 2 weeks, have a holiday and then go back to Canada and stay there. Right. Then 2 weeks now, nearly 30 years now. Never went back. 30 साल हो गया. 30 साल हो गया. It's a beautiful country. Came here as a young bachelor. Then went to Bangladesh. Got married. Got a lovely wife. I'm a father. I'm an economist. Got a lovely young boy. He's a grown man now. He's 24 Achha. years old. He's finishing his law degree in law and economics. Achha. Working with the law firm, law firm on a part-time basis and finishing his studies. You only one son? Only one boy, yeah. Okay. Canberra has been a beautiful place. And when I came, I wanted to settle in Melbourne. Cricket, we are cricket people. MCG, who can forget? Absolutely. Wanted to settle there. And then came to University of Canberra in 92 for a job interview. Right. Then fell in love. If I stay in Australia, the beautiful place in the world. This is the place to be. And COVID-19 में बता दिया है कि कैनबरा से बढ़िया शहर कोई नहीं है दुनिया. Oh, we have been so fortunate, so lucky, To be touchwood. Touchwood. तो कैनबरा आपका नया होम टाउन हो गया. This is my home. And you're loving it. और
और आपने बताया कि आप फैमिली है, तो फुल जॉब करते हैं या जॉब से आपने रिटायरमेंट लिया है क्या? No, भाई साहब, I mean, since I came to Australia, I've been I taught in Sydney University for a while. अच्छा. Then came to Canberra in '93. Ever since I've been working in public service as an economist and policy work. I have taken leave from work अच्छा. and to focus on the election campaign. Right. But the benefit of living and working in Canberra is immense. My day job has been working in public service for all these years, but other time I've been doing volunteering all this time. Right. And, the contribution that you make in a public service and a voluntary level are two different contribution. अच्छा. Public service, you make contribution that has national implications. So whenever I go to Sydney or Melbourne, I see some of the things that have been involved in policy level, like CityLink in Melbourne. अच्छा. हाँ हाँ. And I go there and I drive through and tell my son, boy, I was involved in this, making that happen. Very Go to nice. Sydney, because I was in infrastructure bond, working on these issues and funding from the Commonwealth side. See, बहुत बढ़िया मैनुअल जी, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी जर्नी कि आपकी बांग्लादेश से शुरू हुई और सीधे आप ऑस्ट्रेलिया आए, कैनबरा आए और आपने घर बनाया एंड यू गॉट अ लवली फैमिली एंड सन एंड यू लविंग कैनबरा एज वेल। Beautiful. आपने कम्युनिटी में बहुत सारे काम किए होंगे, डेफिनेटली यू मस्ट हैव वर्कड फॉर कम्युनिटी इन हियर इन कैनबरा, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग लाइक आई शुड जंप इनटू द इलेक्शंस एंड डू समथिंग मोर फॉर द कम्युनिटी। इस बारे में हम जानेंगे, विल लर्न मोर अबाउट यू, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। एंड डू यू लव बॉलीवुड और डू यू लव हिंदी म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक, और किस टाइप का म्यूजिक आप पसंद करते oh, हैं? भाई साहब, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan, My the hero. big way, the big B, or Big B. And who doesn't like him? He's the Shahenshah of Big B is my boy. our Indian subcontinent, क्या world wide। तो आप चलिए आज आपके मनपसंद अमिताभ बच्चन के गाने सुनेंगे और दोस्तों को और आपके बारे में जानकारी देंगे कि आप क्या करने वाले हैं, क्या आपने होमवर्क किया है, ग्रीन्स पार्टी के आप कैंडिडेट हैं, क्या पॉलिसीज आप लेकर आएंगे, क्या यूरेबी में आप क्या कुछ नया करेंगे, व्हाट आर यू गोइंग प्लानिंग, व्हाट आर योर प्लान्स टू डू। सो इस बारे में हम जानेंगे। श्रोताओं को आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए। और आज हम मनपसंद गीत सुनेंगे अमिताभ बच्चन के, क्योंकि वो मैनुअल जी के सबसे मनपसंद फेवरेट हीरो हैं। तो ये आया प्यारा सा गीत, और एंड ही लव्स रेखा जी ऑल्सो। Oh, Rekha. रेखा वन ऑफ Best duties I think Bollywood had. तो रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी इज वन ऑफ द लवेबल जोड़ी, नंबर 1 जोड़ी इन बॉलीवुड, क्या पूरी हिंदी सिनेमा में। चलिए उनका एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। चलिए आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। हमसे प्यार
तेरी नजर डबडबा जाएगी, बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। दोस्तों आप सुन रहे हैं जी हाँ रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और आज तड़का लग रहा है इलेक्शंस पे, यानी राजनीति पर या कहिए पॉलिटिक्स पर। और आई एम नॉट एडिंग तड़का टू द पॉलिटिक्स, आई एम जस्ट आपका मनपसंद आरजे मनीष। और लेकिन पॉलिटिक्स का तड़का लगाने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री मैनुअल हक जी, जो कि यरबी क्षेत्र से खड़े हुए हैं, एंड ही इज़ द ग्रीन्स पार्टी कैंडिडेट। ये बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है कि कुछ करना है कम्युनिटी के लिए। मैनुअल जी, आप बताइए कि कैनबरा कम्युनिटी के लिए अभी तक आपने क्या क्या काम किए? What have you done for the? First up, I've done few things. Ever since I came to Canberra as a young bachelor in early 90s, almost 3 decades ago, I've been involved in community organizations. I was the president of the Bangladesh Australia Association for a long time. I was the president of the Islamic schools in Canberra. I was the president of the Gangaleen Mosque the last couple of years. Achha. As president of the Gangaleen Mosque project, I have led the project and delivered the multi-million-dollar Gangaleen project. Achha. We raised $2.8 million. We united about 40 different ethnicities. Muslims come from all over the world, from Horn of Africa to Japan, and it's quite challenging to bring everybody together for a common cause. See, you give people a vision, unite people for a common cause, work together, manage challenges, negotiate funding, outcome, projects. So I'm very pleased that I was able to lead the project and delivered a massive project for the community. There will be community assets for generations to come. The thing that I've been able to do is not me alone. It's a team effort. I need to make it clear. It's a team effort. I was the front face. सही बात है. Front face. Flag the cop and do the things, but it is a community effort. It is a community resources for the community, by the community, and it will be a community resource for generations to come. So many things I've been able to do. This mosque project, the last couple of years, has been the outstanding one. Yeah, okay. So you have been involved, and Gangaleen, it's only in Gangaleen? All in Gangaleen, yeah. I've been in Gangaleen for more than 20 years. 20 years? More than 20 and years. You love Gangaleen? I love Gangaleen, what it has to offer. Just like you love Canberra, you love Gangaleen, and Gangaleen is a new Canberra. That has been the fastest growing region in whole of Australia. Last 15 or so years. And still growing. Still growing. And a lot has to be done, and I have got a lot of visions for the Gangaleen area, and I'll talk to the audience in a few minutes time. But the beauty of Canberra, when I was living in 90s, I was living in Chifley. And I came to this studio for a few times to do some of the programs. Oh, is it? You have been part of this studio as well? Part of the studio as well. Very nice. From there, when I moved to Gangaleen, it was a sleepy
village. I mean, there's not Yeah. much was there. Only the Palmerston and suburb and Gangali Nulis. Right. From there, we have become a thriving suburbs, thriving region. Mm-hmm. So about 20 suburbs or so. So how big is the Bangladeshi community here in Gangalin or in Canberra? Do you think, like, coming from? Do you have any idea? Like, There's no actual statistics because in census people do not identify. People often reluctant to identify as such, but because they become Australian citizens. because then look, I'm an Australian now. Yeah. Why everybody I mean, and your sons and daughters, Yeah. everybody's Everyone's kids also Australian. Yeah. Australian. So they put Australian in Yeah. the statistics, isn't Because it? this is my home. Absolutely. Similarly, yours. So you have been 2/3 of my life. I'm in this town. Yes, right. This is my home. If I go to Bangladesh, I can feel like kind of visitor. People True. treat me like as visitors. And this country and this place has given us so much. So much. So why not we should give them Yeah. back as you are doing? Yeah. The diversity, the beauty of this country is wonderful. I love Australia. Bangladesh is my home birthplace, but this is my home now. Absolutely. So we love the beauty of my home. So when did you thought that you should jump into this election? When this idea came from? Like, you've done so much for your community in Gangalin and Bangladeshi community and mosques you talk about, your Muslim community as well. कब आपको लगा कि मुझे कुछ करना है, in election में आना है? It was never in my plan, but the community service is in our DNA. My grandfather, Right. he was a community leader in my local area in my Bangladesh. My father was involved in community activities for a long time. Right. So in that sense, it was in my DNA. In my student days in Bangladesh, my uncle was a student leader. So whenever I used to come home, Achha. I was a high school student. Let's go for rally. So I used to do all those things. All Okay. this, Let's go. politics. Let's Let's go. go. But when I left Bangladesh, I never thought about those things. The last 30 years or so volunteering, I never thought about those things. But the issue came to table after I finished my mosque. Right. The people often ask why I joined Green Party. Right. I don't know how many of you are climate affected, but people in Bangladesh are one of the most heavily affected climate population in the world. So you can say Because of the monsoon and rain. rain and cyclone and the flood, flood and sea level rising up. So we are one of the first climate refugees in the world. People of Bangladesh. The memories that I have got in my mind, floods drowning whole villages. Okay. We have seen it in the Ganges, takes whole villages down. Because the monsoon time, the whole village after village goes down. Because Bangladesh is on the delta of Ganges. Yeah. The summertime droughts. So those memories still resonates in my in my mind. So one of the reasons I joined The Greens. Because you're very passionate about environment and environmental issues, and we need to make a difference. We need to do something about that. Climate matters, to save the planet, and together we can make a difference. You and me alone, we can't do anything. So that's your plans, and then I can see your manifesto, which is on the poster, that green jobs package, building our neighborhoods, real climate action you're going to bring. Yeah. Wonderful. That's the passionate. I can see आपके पास बहुत सारा, मतलब क्या कहते हैं, मसाला है to कुछ करना है कैनबरा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, and your home country which is Bangladesh. चलिए आपसे और भी जानेंगे कि आप क्या बदलाव लेकर आएंगे, व्हाट आर योर पॉलिसीज आर एंड व्हाट इज द ग्रीन्स पॉलिसी फॉर ACT, क्या चेंजेस आएंगे, और आपके लीडर शेन रिटनबरी के बारे में भी जानेंगे. लेकिन लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक. और जैसे आपने कहा, अमिताभ बच्चन के आप फेवरेट हैं, आप मनपसंद हैं, और यू लव अमिताभ बच्चन. Please put something Amitabh and Rekha ji together. Oh, okay. So next song is Amitabh and Rekha coming together. चलिए, और एक गाना मुझे याद आ रहा है, परदेसिया. परदेसिया ये सच है पिया, मैंने तुझे दिल दे दिया. ये दिल आई थिंक चुरा लिया है रेखा जी ने और अमिताभ बच्चन ने मैनुअल जी का. चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के.
सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मेरा दिल कहता है तू दिल में रहता है। मेरे भी दिल की कली खिल गई है। तेरी तू जाने रे, माने न माने रे, मुझको मेरी मंजिल मिल गई। तू मिल गया, तू मिल गया मुझको पिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आज मैं बात कर रहा हूं द मैनुअल हक जी से, जो कि हैं यरबी से खड़े हुए हैं फॉर द ग्रीन्स पार्टी और कैंडिडेट हैं। और एसीटी इलेक्शंस आ गया। जी हाँ, 17 अक्टूबर को इलेक्शंस हैं। आपको याद दिला दूं, अगर आप कोविड की वजह से अपने घर में लॉकडाउन है या बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा टू गेट द वोटिंग करने के लिए। और इफ़ यू वांट यू कैन गेट अ पोस्टल वोट। हमने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाला है कि वेयर यू कैन गो एंड डू अ प्री पोल वोट कर सकते हैं। आपके हर एक आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपके आसपास देयर इज अ प्री पोलिंग सेंटर्स हैं, वहाँ जाके प्री पोल कर सकते हैं। खुल गए हैं मंडे टू फ्राइडे एंड इवन सैटरडे ऑल्सो, Sunday also. They are open from, I think they are open from 9 a.m. to 6. 9 to 5. I think 9 to 5. 9 to 5. And Friday they are open from 9 to 8. 9 to 8 p.m. तो वीकडेज में भी पब्लिक हॉलीडेज जो कि 4 अक्टूबर को उस दिन भी खुले हुए हैं। 17 अक्टूबर तक आप आराम से कभी भी जाते हैं। कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस वहाँ लगे हुए हैं, तो इसलिए आराम से आप वोट करिए, प्री पोल करिए, पोस्टल वोट मंगा लीजिए। अगर आपको डर लग रहा है कहीं जाना नहीं है तो आप elections.act.gov.au पे जाइए, elections.act.gov.au पे जाइए। फेसबुक पे पेज है उनका इलेक्शन ACT का, वहाँ जाके भी आप उनसे पोस्टल वोट मंगा सकते हैं। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं श्री मैनुअल हक जी से, जो कि जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन्स कैंडिडेट हैं फॉर द यराबी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी या क्षेत्र। मैनुअल जी, आपके बारे में जानने को मिला, आपने कमेटी में बहुत अच्छी सेवा की है, यू डन लॉट ऑफ थिंग्स। आप व्हाट यू प्लान टू, मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, व्हाट आर द 3 थिंग्स यू थिंक दैट राइट नाउ इट्स नीड्स अ चेंज? बहुत हो गया, इट्स बीन इनफ एंड इनफ, गंगालिन में या कैनबरा में। But a few things. You go into public life to serve. The difference between Australia and other parts of the world. Right. In the places that we come from, there's a tendency that you go into public life to rule. Mm-hmm. There's difference between our subcontinent politics and here. Over there, you go to rule. That's somehow the tendency there. But here, you're the servant of the public. Very You're true. there to serve. Well said. Right. So my intention is to serve the community. I've been serving community for the last 30 years in his voluntary roles. This is the best next level up. The point you asked, very well, very good question, excellent question. 3 things, I'll mention 2 things. What Green Party is doing for Canberra policies, and the policies that are brought for Gangalin specifically, for Yarabi. The Green Party's commitment is to eliminate homelessness.
अच्छा. about 30,000 people, 30 to 40,000 people are disadvantaged in Canberra. We are one of the lucky country, and Canberra on top of that, one of the luckiest city, Capital city of the world. Of Australia. And unfortunately, still about 30 to 40,000 people are having difficulties in life. They don't have a house to sleep or not only house, mental health issues, financial issues, the poverty issues. The Greens' commitment is to eliminate homelessness from Canberra. अच्छा. Number 2, we want to connect our suburbs through better investment in infrastructure, cycling path, reducing congestions on roads. Right. And another thing you want to do, green vehicle, electric vehicle charging facilities across town, including green jobs. अच्छा. These are and another fundamental issue that Green wants to implement, increase tree canopy coverage across Canberra up to 30%. अच्छा. I don't know how many of our listeners know, due to in Gangalin area, tree canopy coverage is only about 6%. And because of the low tree canopy coverage in Gangalin, compared to established suburbs like Kaylin or Griffith, or more trees there, the temperature variation in summertime about 10 degrees Celsius. So it gets more hot. So you want to plant more trees, many more trees across Canberra. No, not only in Canberra, across Canberra, so that we can look after our environment, have a better quality of life. And you can breathe better. Have more greenery. Specifically in Yarraby, my commitment to the community, number 1, I'll be your voice. I'll be your voice, I'll be your eyes and ears in the assembly. Sure. We need to have our voice in the parliament. And I'm committed to be your voice if you entrust me with your vote and with your support. Right. I'll be your voice. First thing I'll do, we will build a large multi-purpose community center. अच्छा. We will expand the Gangalin CIT campus to provide educational opportunities for all. Okay. In Gangalin. We will revitalize Yarraby Pond in Gangalin. Let me, if you allow me, I want to explain the town center, community center, and the Yarraby Pond. So you're talking about the multi-purpose community center. Because other parties are calling it multicultural center. Yes, that's what I'm going to talk about. But as you mentioned earlier, I've been here about 30 years, nearly 30 years, always doing volunteering activities like you have been doing. And all these years, we have had, our communities are big, and we lobbied governments of both sides to have a large community space. Right. Lobbied for nearly 30 every political parties. Every political party said, okay, we'll build a multicultural center. Right. Never happened. Never happened. As a Greens candidate, first thing I did, I negotiated with the Green Party. I proposed to them and I explained to them that we want a large multi-purpose town hall. I asked for a town hall. Town hall. Right? Canberra is national capital. We don't have a town hall here. सही बात है. We should have gorgeous town hall that community can be proud of. सही बात. That during the daytime, the town hall will serve the civic purpose. Yes. The civic ceremony that government normally does. Other time becomes a huge community center. The center I'm talking about, 2,000 people sit down dinner with appropriate kitchen, appropriate stage. That will serve the need of the community, like our weddings, thousands of people. At the moment, we don't have any venue here. So what do you do? We go to Queanbeyan. So what are you doing? Exporting all the jobs from Canberra, all the catering business from Canberra to Queanbeyan. The businesses are going there. All the jobs for young people going there. So we have to keep those jobs here, generate economic activities in Canberra, supporting our local jobs, young people, and supporting our local businesses. The center that I'm talking about lobbied both political parties. They never did anything. As a Green candidate, I proposed and negotiated with the Green Party. This is the first time I'm pleased to say that I was able to negotiate and get it out from the Green Party as an election commitment in my 30 years of life. The Green Party is the first one to commit in writing as an election commitment. Now I'm very pleased to see that both Labour and Liberal are saying, okay, they will build a center to multicultural center. But the difference is,
They are proposing to build a multicultural center. Right. What I have proposed and negotiated with the Green Party, we want to build a multi-purpose community center. Right. Do not want to be tagged with the word multicultural because they have been saying that for the last many years. They will build a multicultural center and they haven't delivered. सही बात. Right? We want to be part of the community. We do not want to be segregated. So do not tag us that, okay, brown people, go and sit in the corner. We are equally valid community members. Right. You want to be part of the community and we want a multi-purpose community center where all communities will come together. बिल्कुल बिल्कुल. Right? That will provide social harmony, social cohesion, as well as will provide jobs for young people, support our local businesses. Number two, revitalization of Yarabi Pond. Yarabi Pond, what I call it, is jewel of Gangalin. अच्छा. It's a jewel of Gangalin, literally. It's a beautiful place. We can do so much. एकदम. What I want to do, our vision is, we want to first of all need to purify the water. अच्छा. We want to have a lot more water-based sporting activities, recreational fishing. We want to have an artificial beach enclosed for the children, so the children can swim. Very nice. Another important thing I want to do, I have an open space, open stage concert, so that Right. people can perform. Young kids can go and perform. And most importantly, we want to have mobile food vans. अच्छा. What brings people together? Food. Food. Imagine summertime, sunset 9 o'clock. All the mobile food vans are there. Indian curry, Bengali curry, Turkish coffee, Japanese sushi, Dutch pancake. Nepalese Right? momos. Nepalese momos, and all of this stuff. The Malaysian dosa. There's so many things that we have seen around. yeah, the Chinese noodles. Everything come together. The multicultural food festival every day of the year, not only one day in Civic. All those foods are happening. The spicy aroma going on. Parents are sitting on the open park, enjoying the foods. Children are playing in the beach. Grandparents are working on the walking track. Young people are playing their music on the open stage. Very Bollywood nice. dance is happening. Right? It's going to be vibrancy, community coming together. Again, supporting jobs for local young people, supporting our local businesses. बिल्कुल. In addition, it is going to have an impact on mental health issues. बिल्कुल. Yeah, but the elderly people, instead of sitting at home, will be going out, walking on the tracks, Mixing with the people. mixing with the people. And especially migrants के जो parents हैं. Parents are sitting, instead of sitting at home alone, coming out, talking to other elderly people. It also have an impact on addressing, to a certain extent, domestic violence issues. People sitting at home, they always quarrel, argue. When you're going out, enjoying some food, or sitting in the fresh air, talking to other people, social interaction. the couples will be will be forced to talk to each other. Having some food outside, other people there, minimizing some of the conflicts. So what I'm calling it is a low investment, high impact initiative. Very nice. Right? This multi-purpose community center, not multicultural center. Again, multi-purpose community center. Very nice. I want to stress to the audience. Bhai Sahab and Bhaiji, we are talking about a multi-purpose community center that I'm very pleased that I have been able to bring to the community. And if I'm your voice, if you entrust me with your responsibility, with your support, I can be the voice and I'll put my heart and soul out to deliver this center for you and for our community, for whole of Canberra. Very nice. Not for particular community. So we are part of Australian. We do not want to be tagged with what multicultural. Very nice. Right. Another thing I want to do is third thing. CIT. अच्छा. You and I, we are here because of our education. Education. Education is the way out of poverty. बिल्कुल. About, as I said, 30 to 40,000 people are under difficult circumstances going through life. We need to provide education opportunities for all. Gangalin is the fastest growing region in not only in Canberra, all of Australia, and you do not have a CIT presence there. There's a huge shortage of trades in not only in Canberra, across Australia. So you need to provide education opportunities with appropriate facilities. Right. The economic growth that is happening in Gangalin, all the trades are there. Huge shortage of childcare workers. Bilkul. So many childcare workers, childcare centers in Gangalin area. Bilkul. Imagine if you have an expanded CIT campus, all the trades can take 2 hours break from their work, go and attend the class, go back to the job. They don't have to take a time off whole day. All the childcare workers working around those areas, just take a lunchtime break, go to the class, come back. They don't have to drive all the way to Takralong, all the way to Wooden or Civic. They don't have to take time off.
So supporting local jobs, local education, local area, local need. So what I'm calling, I'm a need-based person. Very nice. I'm bringing to the community need-based policies, not the greed of few. Right? My need-based policies are a multi-purpose community center, revitalization of the Yarabi Pond, and education for all. Very nice. These are the needs of the community. And home for all, as you home for all that I've already mentioned. That's across Canberra. Homelessness is a broader issue. Green the policy of the whole of Canberra. Very nice. These are the policies that I'm bringing to the table. Very nice. For the community. आपके पैशन देख के मुझे बड़ा कहते हैं I'm impressed. मतलब मुझे खुशी हो रही है कि आप इतना कुछ करने के लिए तैयार बैठे हैं. तो ये तो हम अपने यराबी के वोटर्स पे छोड़ देते हैं कि आपको इलेक्ट करते हैं कि नहीं, बिकॉज और भी कैंडिडेट्स हैं और भी पार्टीज हैं जो इसमें भाग ले रही हैं. तो आप लोग सुन रहे हैं. जी हाँ दोस्तों, अगर आप यराबी से हैं या आप खाली कैनबरा में रहते हैं और एससीटी इलेक्शंस में आप भाग ले रहे हैं, तो प्लीज़ गो आउट एंड लिसन टू एवरी पार्टी, एवरी कैंडिडेट. और ये जो मैनुअल हक जी हैं, ही इज़ अवेलेबल 24/7. आपकी बातें सुन सकते हैं, आप इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स ला के देख सकते हैं, या इनसे और पूछ सकते हैं कि और क्या करना चाहेंगे, या आपके पास कोई ऐसा कोई एजेंडा है, यू वांट टू टेक इट टू हिम, he can take it forward. Please. इनकी सारी जानकारी हम देंगे, लेकिन अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि बहुत बातें हो गई. तो एक म्यूजिकल ब्रेक बनता है और आपकी ही पसंद का एक और अमिताभ बच्चन रेखा सॉन्ग आ रहा है फ्रॉम द आइकॉनिक मूवी सिलसिला. वाह, क्या सिलसिला के बिना हम दोनों की प्यार मोहब्बत की ये जोड़ी है वो कंप्लीट नहीं होगी. चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. जी हाँ, पूरा तड़का लगा के. और हम बात कर रहे हैं मैनुअल हक जी से, जो कि ग्रीन्स पार्टी के कैंडिडेट है फॉर द यराबी. लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए. ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए. सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी. तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए. क्या कहूँ
अब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में। आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। और आज जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल तड़का या राजनीतिक तड़का लग रहा है ऑन द ACT इलेक्शंस। और साथ में हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं, जी हाँ, ही इज़ द कैंडिडेट, ग्रीन्स कैंडिडेट फॉर यराबी, श्री मैनुअल हक जी। ये इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया और ये जो पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, ये वाइडर ब्रॉडर कम्युनिटी के लिए जो लेकर आएंगे यराबी के लिए, और जो इनकी ग्रीन्स पॉलिसी हैं, जो ग्रीन्स पार्टी पॉलिसी हैं, वो जो कैनबरा के लिए, तो उस बारे में भी इन्होंने हमको जानकारी दी है। चलिए अब बात करते हैं मल्टी कल्चरल कम्युनिटी के बारे में। मैनुअल जी, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि आप बहुत पैशनेट हैं, कुछ करना चाहते हैं यराबी के लिए और गंगालिन के लिए और कैनबरा के लिए। Multicultural community is a huge community in Canberra, and we are very proud of that. And we are set an example all over the world की, and we have got multicultural festivals and multicultural, हम लोग मतलब मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छी तरह रहते हैं, and और अच्छा भी लगता है. So what are your plans for multicultural community in general, like just for, or maybe I should say Indian subcontinental community as well in ACT or for Yarabi? What's up? Very good question. Let me repeat the specific policies that I brought to the table. Large multi-purpose community center, revitalization of the Yarabi Pond. Very These nice. two initiatives will create jobs for the local people and will support our local businesses. By the way, 75% of the small businesses are owned and operated by people from multicultural background. The two initiatives that I'm bringing together is going to support small businesses, Right. and majority of them are owned and operated by people from multicultural background. Very nice. Right. The education opportunities that I'm bringing to the table is for people of all ages, from all background, including people from multicultural background. In addition to these three, large multipurpose community center, revitalization of the Yarabi Pond, and expansion of CIT, I am going to build a community garden in Yarabi. अच्छा. The community garden will again bring people from all walks of life. Specifically, it will help address the needs of our elderly population. Okay. They will have a little patch in the garden. They will be able to grow and plant their own veggies and grow their own fruits. Very nice. Will be able to meet with other community members, exchange ideas, spend time together, go for coffee, go for a walk, get them out of home. Very nice. It will be like a mini Floriade community garden. Community garden. You can, as you said, you can अपने veggies, अपने मनपसंद Yes. सब्जियां वो grow कर सकते हैं, and then you can mix and match with Mix the and people. match, yeah. Another important initiative I'm bringing
for the community, including multicultural community, female-only swimming option अच्छा for all female from all backgrounds to swim, to exercise in privacy and comfort without having to worry about who's staring at them. So female-only swimming option for female of all persuasion, all background to exercise in privacy and comfort. जैसे फीमेल ओनली जिम्स हैं यहाँ पर Female-only gyms, तो but there's no swimming- there's female-only no swimming no pool. swimming pool. so you're going to build one just for Now we'll do not have to build. With the existing swimming pool, we'll make arrangements with the pool authorities. Okay. So, but block up time will be there. It's female only. So Achha. female from all backgrounds. okay Starting from Horn of Africa to Japan, European, Bangladeshi, Malaysian, Yeah. Indian, our Boinji, our mother, our grandmother, everybody will be swimming there. yep that's right So why do we need this? We need to have a space for our mothers, our grandmothers, our sisters, our wives to exercise in comfort for 3 reasons. We need a healthy mother for a healthy family. बिल्कुल very true We need to provide an opportunity for our females to learn how to swim. Specifically, our migrant community population, many of the mothers and sisters and grandmas, they do not know how to swim. बिल्कुल In summertime, all the accidents happen in the beach. If we do the statistics, majority of the migrant people, they don't know how to swim. They have never had the opportunity. and they're scared of water as Scared well. of the water as well. So we need to give them that comfort. Look, nobody's staring at me. Let me go and learn. Yes. Many of them do not want to go to the pool because privacy issues. Number 3, that female-only swimming option will give an opportunity to our mother, grandmother, or our ladies an opportunity to mingle with other community people. right This is increasing social cohesion. Not only health benefit, it's life-saving matters as well to learning how to swim, plus increasing social cohesion. अच्छा Right? So my 2 specific initiative, commitment for the people of Yarrabi, in addition to top 3, a community garden and female-only swimming option for all female from all background, including white sisters, brown sisters, black sisters, everybody. वेरी नाइस बहुत बढ़िया चलिए आपका पैशन देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है एंड और भी बातें हैं आपसे बात करनी है तो दोस्तों अगर आपको भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है आप इनसे बात करना चाहते हैं तो आपसे अगर संपर्क करना चाहे कोई मैनुअल जी तो आपका अपना फ़ोन नंबर या फेसबुक पेज या वेबसाइट कुछ बताना चाहेंगे My phone number is 0421-792-617. I'm on Facebook, Manuel Haq for Yarrabi. My email address is mainul.haque@act.greens.au. Sorry, .org, I think. .org.au Yeah. So I'm available and I seek your support. I seek your suggestions. If there's anything else that you would like me to do, I'm very keen to hear your voice, very keen to hear your suggestions. And above all, election is starting, has already started from today. Today is 28th of September. Pre-polling has started. It's going to continue until 16th of October, and the 17th of October is the finale. Yes. So we request everybody to go out and vote. And obviously I seek your support so that I can be your voice in the parliament and I can deliver the things that I have vision for, and these need-based policies that I brought to the table after consulting many people. Also, through my community efforts for the last 30 years, these are the things that I felt the need of the community. Yeah. We, managed by you and people like you and me, you have done the hard yet in life. We are not fresh people out of uni going to politics and want to be an MP. We have done the hard yet. We have seen the life ups and downs. We have got the skills and experience, and we can do things better. We can do many more things if there are opportunities there, and we can be the voice. And I seek everybody's support, everybody's prayer. And बहुत बढ़िया चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं मैनुअल जी आपके मनपसंद का एक और गीत आ रहा है अमिताभ बच्चन पे फिल्माया हुआ जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है मतलब आपकी जहाँ नज़र दिख रही है तो चलिए एक प्यारा सा गीत म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आप सब लोग के दोस्तों कहीं जाइएगा मत लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी हाँ पूरा तड़का लगा के ये हो गया है 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में आपके साथ में जी हाँ कैनबरा हॉलीडेज चल रहे हैं मतलब स्कूल हॉलीडेज चल रहे हैं अब अपने साथ ले जाइए इसको सुनते रहिए कहीं पे भी और जो मैनुअल जी से हमने बातें की हैं ये फेसबुक पे हमने पोस्ट किया हुआ है उस पर भी जाके आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं या अपने चलिए लगे रहिए दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के
पटापट धिंगड़ी पोको 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 पो धिंग पटापट धिंगड़ी पोको 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 पो जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने देख इधर यार ध्यान किधर है अरे देख इधर यार ध्यान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है समझता काम नहीं ये है तेरे बस का कुकड़ू कुकू क्यों नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं ये है तेरे बस का होश में आ जा ध्यान किधर है अरे होश में आ जा ध्यान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से सामने आए किसका जिगर है हाँ सामने आए किसका जिगर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है चाल ये बंदा ऐसी भी चल जाए बंद हो मुट्ठी अरे चीज निकल जाए गिली 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 छू 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 अरे चाल ये बंदा ऐसी भी चल जाए बंद हो मुट्ठी अरे चीज निकल जाए ये भी करिश्मा देख इधर है हाँ ये भी करिश्मा देख इधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने देख इधर यार ध्यान किधर है अरे देख इधर यार ध्यान किधर है दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी पूरा तड़का लगा के और आज हम बातें कर रहे हैं श्री मैनुअल हक जी से जो कि हैं ग्रीन्स पार्टी के कैंडिडेट फ्रॉम द यराबी इलेक्टोरेट जो कि यराबी जो मान लीजिए गंगालिनपुरा एरिया है जिसमें केलीन भी आता है और गिरालैंग भी आता है। गिरालैंग एंड केलीन इज द ओल्डर सबब्स लेकिन सारे नए सबब्स स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप पे चले जाइए बॉनर है मॉन्क्रीफ है एमरू है केसी है क्रेस है
and goes up to Throsby, and even Hall, Purana suburb, Hall भी आ जाता है. It's a very Plus Mitchell. Mitchell is also part of it. अच्छा, Mitchell is also. Mitchell is an industrial estate of Gangaland. जैसे ये हमारा कोरोजोंग में फिशविक है. It's an industrial estate है. मैनुअल हक जी आपके लिए लड़ रहे हैं. तो मैनुअल जी बताइए कि why voters of your constituency or electorate should vote for you? For a number of reasons, Bhai Sahab. Number one, I've been living there for a long time. I know the area. And as I said before, I'm a community member, I'm a community worker. I've been serving the community for very many years, nearly 3 decades in my various roles. I've seen the Gangalin has grown from a sleeping village to what it is now, Right. and we can do a lot more. I'm a family person. I'm a husband. I've got a lovely, a beautiful young man, and we can do many more for the community together. अच्छा. You can find me anywhere. You can find me in the Gangalin shops. You can find me in the Gangalin mosque. You can find me in the local tennis court. Very nice. It's just not. That's another thing missing in Gangalin infrastructure. Tennis court is not there, but we're going to make it happen. Okay. अच्छा. We're going to make it happen. I'm seeking people's support for various reasons. Couple of reasons. I want to serve the community in a different role. I have been serving 30 years in a different role. I want to be a voice. We do not have a voice at the decision-making tables. Right. There are about more than 30% of the population in Yarabi are from different backgrounds. Yeah. Canberra has grown, Yarabi has grown, our parliament has not changed. Parliament representation is still homogeneous from same Eurocentric background. We need to have different voice in the parliament. To have diversity. Diversity brings productivity. The initiative that I brought to the table, large multipurpose community center, revitalization of the Yarabi Pond, expansion of CIT, female only swimming, community garden. Right. These are the things I would like to deliver, I would like to do. If you give me the opportunity to be in the parliament, I'll be working for you day and night. The judgment public will make based on people's credibility. What I've been able to do, my life is in the public record. You Google me, you'll find me, what I've been able to do, what I have done. And my visions are in the public record as well. I seek public support, not to rule, I mentioned earlier, to serve. You do not go into public life to rule. You go into public life to serve, to make a difference. And we want to contribute in a different level. आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन अब ये बताइए, because it's been Yarabi में मैं देख रहा हूँ, I'm looking that it'll be tough because there are already 4 candidates from our Indian subcontinent. 2 from Liberal Party, 1 from Labour Party, and you are from Greens. How tough it will be? Chances of winning? It's a good question. It's not going to be easy. It's not going to be bed of roses. But feedback that I have been getting is quite good. Our community is revitalized, community is energized, the community sees opportunity to have a voice of our own in the parliament. Unfortunately, other political parties have, I think they are playing politics with our communities. Why you have to have two candidates from same ethnicity? People need to judge whether they are serious for us to win or not. So I personally am feeling good. The campaign that you have run, the feedback I'm getting from the community, from various communities. So I'm feeling good, but it is never to be taken granted. It is going to be tough, no doubt about it. But I think we'll make it. The positive response that we have got from the community. The most importantly, we have been able to energize and inspire a brand new generation. People from first generation, our kids, your kid, my kids, Yes. they're enthused. Uncle, I want to get into politics. They're hugely enthused. And someday, one of them will be Prime Minister. Someday, one of them will be Chief Minister. बिल्कुल. Someday, one of them will be Speaker of the House. Someday, one of them will be Chief of Police. बिल्कुल बिल्कुल. So, we are part of Australia. We are Australians. And we want to make a bigger contribution at a बिल्कुल. different level. Very nice. And we need community support. So you're confident you will get into this ACT election
very close. It'll be a tough fight. Tough fight. As it'll be Tough tough fight. You're doing your best and our wishes are with you. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि आप आए. Fingers crossed. And as we have been saying that we don't support any party, we don't support any candidate. As part of the community radio, वो क्या पॉलिसीज लेकर आएंगे यही वो बता रहे हैं और यही हम इनसे इंटरव्यू करके वार्तालाप करके आपको बता रहे हैं कि क्या लेकर आएंगे. तो आपको अब आपके ऊपर छोड़ देते हैं श्रोताओं, यूरेबी के जो लोग हैं, आप किसको वोट देते हैं. जाइए elections.act.gov.au पे सारी जानकारी है, सारे कैंडिडेट्स की लिस्टिंग है. अगर आपने नहीं पता है कि आपके इलेक्टोरेट से कौन कौन खड़े हो रहे हैं, हु इज, तो आप उनके बारे में जान सकते हैं. और अगर आप मैनुअल हक जी के बारे में जानना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट है जी, आप actgreens.org.au पे जाके आप जा सकते हैं. थैंक यू मैनुअल जी, बहुत अच्छा लगा एंड सो नाइस ऑफ यू. एंड आप यू आर सो बिजी, अभी आपकी कैनवसिंग चल रही है एंड ऑलरेडी प्री पोल स्टार्ट हो गया है, तो यू मस्ट बी वेरी वेरी बिजी. आपने हमारे लिए समय निकाला, यू गेव अस सम टाइम एंड इतनी सारी जानकारी दी. एंड व्हाट आर योर पैशन, व्हाट आर यू गोइंग टू ब्रिंग टू योर यूरेबी एंड टू योर इलेक्टोरेट, सुनकर पढ़कर देखकर अच्छा लगा. एंड हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट. Shukran Bhai Saab, to you and to all the listeners in Canberra, in Yarraby, and across the world. Please keep us in your prayer. We seek your support. I'm not confident, but optimistic. Very nice. Optimistic. It should never be taken anything for granted in life, especially the voters. Mm-hmm. So I respect the voters' wishes and hope to get your support on the day. Polling has started. Look forward to your support. And if you entrust with your with your vote, we'll together deliver things for Canberra and for Yarraby. Fantastic. Thank you very much. Thank you, Manuel ji. बहुत अच्छा लगा and wishing you all the best for your political career as well. चलिए, thank you. ये थे मैनुअल हक जी जो कि ग्रीन्स पार्टी के कैंडिडेट हैं फॉर द यराबी. चलिए, आपसे मैं विदा लेता हूं और आपसे मिलूंगा एक और नए प्रोग्राम के साथ, एक नए तड़के के साथ. क्या प्रोग्राम होगा, क्या तड़का लगेगा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा. लेकिन चलिए, आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारा रेडियो मनपसंद प्रोग्राम. और जाते जाते मैनुअल हक जी का एक बहुत ही मनपसंद गीत है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा. चलिए, ये मुकद्दर का सिकंदर कहलाएंगे कि नहीं, ये तो 17 अक्टूबर की तारीख बताएगी. लेकिन आप लोग बस लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. और जो मैं तो यही कहूँगा कि जो आपको पसंद हो काम, जो भी काम पसंद हो, जैसे मैनुअल हक जी कह रहे हैं, वो मन लगा के कीजिए. बस लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. चलिए, टेक केयर, हैव अ लवली डे, बाय बाय. रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा. रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा. वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी
रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है। हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। साज़ गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। I am Moinul Haq, your SCT Greens candidate for the seat of Arabi at this SCT election. You are listening to Radio मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। लगे रहिए, सुनते रहिए। मैं हूं इमरान अमजद फ्रॉम फ्रीडम फाइनेंस इन कैनबरा। Contact me on 0261711777 for any financial planning or retirement inquiries। और आप लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के।